So we did logarithmic differentiation yesterday. Let's continue with now exercise 3.3, and you have y is equal to x raised to 2x. So y is equal to x raised to 2x. मेरी keep it down somewhere. खाली रहेगा लिखने नहीं. Y is equal to x raised to 2x. So this is again x raised to a function, x raised to f of x. Correct? So whenever you have functions of this type, you are supposed to take logarithms. Okay? Whenever it is of this type. आज भी ऐसे ही था एक प्रॉब्लम. The only difference was it was x raised to x. Right now it's x raised to 2x. Same thing. So take log on both sides. So log y is equal to log x raised to 2x. Local later. Then you say I am going fast. तुम अभी तक बुक ही खोल रहे हो. So log y is equal to x raised to 2x. Then what is this is your step 1, right? ये हमारा step 1 हो गया. Step 2 is use the laws of logarithms, and so that will be log y is equal to x raised to 2x into log x. Okay, that's the second step, right? Now see, let's do a quick calculation. Okay, a rough calculation है मेरा. Normally the next step would have been to use derivatives, and my answer would have been derivative of log y. मेरा आंसर आता था 1 upon y dy by dx. And to solve this I would have to take product rule, यानी कि x raised to 2x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x raised to 2x. ये करना पड़ता था, right? So here no problem, x raised to 2x and into 1 by x आ जाएगा log x, but we can't find this one, d by dx of x raised to 2x, because it's again x raised to a function f of x, right? So उसके लिए वापस एक log लगेगा, right? So now there are two ways you can solve this. So I'll first go with that, because we require log for this again. So what we will do is we'll take a log here once again. So log of log y is equal to log of x raised to 2x into log x. Okay, so this from here we get the method 1. Okay, so this is my method 1. You have other options also. We'll see what to do in that. Okay. So therefore we log लिया है, the procedures remain same. Log of log y, and use the laws of logarithm. This is log x raised to 2x plus log of log x. Okay, and the reason for this is log mn is equal to log m plus log n. Okay. So I still need to use the laws of logarithm. जब भी तक use कर सकते हैं, use करना है. So log of log y is equal to 2x into log x plus log of log x. Okay, इसका reason log a raised to m is equal to m log a, right? So अभी logarithmic laws सब use हो गए. Now we can find its derivative. So as far as today's paper was concerned, instead of 2x there will be only x over there. That will be the only change in the whole problem. Okay? So differentiating. So इसको अगर differentiate किया, differentiating above equation with respect to x, we get d by dx of log y
is equal to d by dx of the whole thing. So it's 2x log x plus log of log x. ठीक है? So therefore now derivative of log of f of x क्या रहता है 1 upon f of x into d by dx of f of x. तो ये क्या आएगा 1 upon log y into d by dx of log y. ठीक है? Which is equal to 2 into d by dx of x log x plus d by dx of log x. Right? इसका रीजन लिख लें. What is the reason? d by dx of log f of x is 1 upon f of x into d by dx of f of x. ठीक है? So therefore 1 upon log y into, again d by dx of log y is 1 upon y dy by dx is equal to 2 into, this is not product rule, x log x, correct? X log x it will be product rule. So x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x plus this will be 1 upon log x into d by dx of log x. ठीक है? Same thing. Correct? Product rule. U into dv by dx plus v into dv by dx. सब रहता है उधर ही रहता है. तुम आएगा. Put nothing we use new. It's already there. घरी अभ्यास करायचा था. Correct? नहीं. Other people I am telling them to study 1 hour, even though they have been attending the class since May. उनको 2-3 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ना, कवर अप करने. फिर घरी जाऊन टाइम पास नाही करायचा. ते सास बहू सीरियल वगैरह नाही बघायची. अजिबात नाही शी. वो जान भी देखते रहती थी. अरे मैं कुछ नहीं लगती. फिर वो मेरी ननंद आई थी, वो ननंद ने ऐसा किया. असाइनमेंट्स बहुत रहते हैं सर. कितने असाइनमेंट्स है पता है क्या? मैंने दूसरे मेथड we'll do by both the methods. So this is equal to 2 into x into 1 by x plus log x into 1 plus 1 upon log x into 1 by x. ठीक है? तो ये x और x कैंसिल हो गए. So now what is the procedure once you have taken the derivatives? What is the procedure? You have to take y that side. तो इसमें अभी y भी है, log y भी है. Shift everything on the right hand side because हमको dy by dx ढूंढना है. So therefore dy by dx is equal to y log y into brackets. and ये जो टर्म है वैसे के वैसे 2 into 1 plus log x plus 1 upon x log x. ठीक है? Now we have to replace y with whatever the values of y was. Y was x raised to 2x. X raised to 2x. Now see the term log y. If you go above, अगर तुम स्टार्टिंग में जाओगे प्रॉब्लम के, तो you will see over here this part. What is log y? It is
So it is x raised to 2x into log x, correct? So this is what we will write for log y. So these are from equations 1 and 2. Okay, so we will write it over here. This is x raised to 2x into log x, correct? And then into brackets, this is 2 into 1 plus log x plus 1 upon x log x. Problem is over. This is by 1 and 2. ठीक है, that's all. ठीक है, समझ में आया? म्हणजे फोन कशाला पाहिजे? लिहायचं असतं. ये फास्ट नहीं था कुछ भी. मैं पास नहीं मम्मी ना फिर आप सेकंड सम स्टार्ट करो. घर जाके वीडियो देखा वापस नहीं देखा. हाँ, यू आर देयर इन द ग्रुप ना. हाँ, फिर वीडियो देखना हो क्या प्रॉब्लम है? मेहनत कुछ नहीं करने का, ऐसे आ जाने धूम चिल्लाते. नहीं इट्स ओके, अभी बाद में ले लो. अभी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ना मैं, आराम से 4 बार सुन लो. ओके, लीव दैट मच पेज. यू हैव टू राइट व्हाट यू आर डूइंग. आई टेल यू व्हाट योर मिस्टेक इज. तुम देख रहे हो, हाँ ऐसा है, ऐसा लिखना है साथ में. लिखने वो समझ हाँ, में तो नहीं उसको आता. ही कंसंट्रेशन बोलते हैं. तुम्हारा नजर तुम्हारे बुक में चाहिए, इधर नहीं. You have to hear and write. समझ में आ रहा है? सी, अभी अगर तुमको ये प्रॉब्लम दिया 2 + 3 + 4 × 8, और अगर मुझे ये स्टेप्स करने हैं तो तुमको will you have to look at the board? No. What you will do? You will say हाँ 2 + 3. तुमको मैं अगर बोल रहा भी हूँ तो तुम खुद लिख सकते हो ना. ये 2 + 3 है 5 है + 8 × 4 है 32 है which is equal to 37. ये क्यों जम गया? बिकॉज तुमको मालूम है, तुम पढ़ रहे हो, करेक्ट ना? So that's how you have to look in the book and answer. ठीक है? So तुम्हारा मेथड चेंज करो of studying and of copying and of sitting in the class. So the next one is why. Okay, second method करना है ना इसका. We forgot it. So we lost. So method 2. Now method 2 के लिए I'll go up again. I'll just remove this whole thing. Okay. अभी तुमको क्या फोटो लेना था ले लो जल्दी से. आ गए इधर तो ले लो फोटो जल्दी से. हाँ, वीडियो देखूंगी मैं. अब सीरियल सब छोड़ देने का, ये देखने का भी वीडियो. सीरियल्स नहीं देखती हूँ कौन से भी. नहीं, मैं कोई- टीवी ही नहीं देखती. नहीं, कुछ सास बहू कुछ लाने करने बीच में. बिल्कुल भी नहीं. ओके, सो नाउ फॉर मेथड 2. सो ये मेथड 1 इधर से चालू होता ना. हाँ. Method 1 started from here, so we will cancel this method 1 and we will do method 2. Okay. So now method 2 starts as so method 2 is going to be, instead of taking log again, वापिस इधर log लेने के बजाय what we do is we take derivative directly. Okay, differentiating 2 with respect to x, we get 1 upon y dy by dx is equal to d by dx of x raised to 2x into log x, which is equal to product rule, x raised to 2x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x raised to 2x. That is 1 upon y
dy by dx. Therefore 1 upon y therefore 1 upon y dy by dx is equal to x raised to 2x into 1 by x plus log x into d by dx of x raised to 2x. अभी इसको कुछ कर नहीं सकते एट प्रेजेंट. So therefore dy by dx is equal to y into x raised to 2x upon x plus log x into d by dx of x raised to 2x. ठीक है, इधर तक आ गया. This we will call as equation 3. अब ये पूरे इसमें हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है पूरा इक्वेशन 3 में? The problem we have is we don't have this value of x raised to 2x. इसका डेरिवेटिव नहीं है. So we will call it some other function. इसको हम लोग दूसरा नाम दे देंगे. We will say u is equal to x raised to 2x. So we will call it as u. U is equal to x raised to 2x. Okay, so we'll say let u equal to this. So that will become equation 4. Therefore, log u is equal to log x raised to 2x. This method is a little lengthy. इसमें टाइम ज़्यादा जाता है इजी बट टाइम ज़्यादा जाता है. सो अगेन लॉज ऑफ लोगैरिथम्स 2x इंटू लॉग x, ये हो गया log u, and therefore differentiating above equation with respect to x we get. So now what is the difference? Instead of y it is u. चेंज उतना ही हुआ है, x y के जगह पे u है. ठीक है, and so therefore 1 upon u du by dx is equal to 2 into d by dx of x log x. तो ये ढूंढो अभी d by dx of x log x कितना आता है? 2 plus 2 into log x. Basically x log x कितना आएगा? 1 plus log x. x into 1 by x plus log x into 1. ठीक है, so I'll still write 2 into x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x, which is equal to 2 into x into 1 by x plus log x into 1, which is equal to, तो ये x and x cancel हो गया, and so therefore du by dx is equal to 2u into 1 plus log x, which is equal to 2 into u क्या है? x raised to 2x into 1 plus log x. Correct? This is from which equation? CA 830 को 830 को you are keeping normal class now. Yeah, 830. So equation 5 ने this is by equation 4 by 4 u is equal to x raised to 2x लिया था ना इधर equation 4 we have taken u is x raised to 2x और substitute हो रहा है वापस u is becoming x raised to 2x. ठीक है, into 1 plus log x. अभी इसको बोलेंगे हम लोग equation 5. Okay, so this is by 4 and this is इधर सिर्फ इतना लिख लेंगे d by dx of x raised to 2x. This is by, not by, this is equation 5. Okay, आ गया, इधर तक आ गया. Now see, we had in equation 3 हमको सिर्फ यही सब्स्टिट्यूट करना है. करेक्ट?
बाकी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था एंड वी हैड टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y। तो पहले हम लोग वी विल फर्स्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू जो हम लोगों ने ढूंढा है d/dx ऑफ x रेज़ टू 2x, ये हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद y का वैल्यू इक्वेशन 1 से लिखेंगे। ओके, सो आई विल रब दिस ऑफ and I'll write over here. So therefore substituting from 5 in equation 3, ठीक है, ये जो फिफ्थ इक्वेशन था ये लिख लिया ना तुमने, लिख लिया। ओके, सो सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट करना है। सो वी विल राइट हियर substituting from 5 in equation 3 we get dy by dx is equal to y into x raised to 2x upon x plus log x into this is x raised to 2x into 2 into 1 plus log x ना, इक्वेशन 5 करेक्ट वही है ना, 2x raised to 2x, थोड़ा सा मैंने 2 बाद में लिखा, that's okay, right? And now what is y? y is equal to x raised to 2x into brackets x raised to 2x upon x plus 2 into log x into x raised to x into 1 plus log x। जो टर्म्स है वैसे के वैसे, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया रहेगा इधर उधर, बट द सेम टर्म्स हैव बीन रिटन ऑल ओवर, ठीक है। नाउ वी कैन, सो दिस इज बाय इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, ओके, y का वैल्यू 1 से आया, सो दिस इज इक्वल टू x raised to 2x into x raised to 2x can be taken common and you're left with is 1 by x plus 2 log x into 1 plus log x। सर वो x raised to 2x ये बाहर आ गया, मैंने वो साइड 2 log x into x raised to 2x, यही टर्म है ना, ये 2 log x x raised to, अच्छा x raised to x लिखा मैंने, ओके सर, x raised to 2x, so it becomes x raised to 2x, वो बाहर आ गया, 1 by x plus 2 log x into 1 plus log x, that's the answer। हाँ, तो दो मेथड है, अभी तुमको जो मेथड तुमको पसंद आए वैसे करना है, प्रैक्टिस बोथ so that you can solve any way, anyhow, anytime। So now the next one is y is equal to e raised to x raised to x. Third one, y is equal to e raised to x raised to x. Now ये कौन से फॉर्म में है actually? If you see the form, it is in which form? E raised to f of x. Okay, वो x raised to x से correct है, but it is e raised to f of x. सर x raised to e raised to x question, It's x raised to, e raised to x, okay, no, okay, I took the third one, तो third one is e raised to x, okay, बाद में कर लेते हैं, अभी वो second one बाद में कर लेते हैं, ठीक है। मुझे लगा वो second problem हो गया, मेथड 2 के चक्कर में I thought we finished the problem itself, so ठीक है, अभी third लिख लिया, ये ले लेते हैं, ठीक है। So this is in the form e raised to f of x.
तो डेरिवेटिव ई रेज टू एफ ऑफ एक्स का कैसे रहता है? ई रेज टू एफ ऑफ एक्स लॉग ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो वो एक मेथड है एंड आई विल शो यू द अदर मेथड ऑल्सो. ठीक है. सो मेथड 1 इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव लेगा. ओके. मेथड 1 इज टेक इट्स डेरिवेटिव डायरेक्टली. सो डी वाई बाई डी एक्स is equal to d by dx of e raised to x, which is equal to e raised to x into d by dx of x raised to x. So reason d by dx of e raised to f of x is e raised to f of x into d by dx of f of x. Okay. Now we'll do the same thing that we did before. We'll say let u equal to x raised to x. अभी ये हमारा पहला प्रॉब्लम है. Logarithmic differentiation जब ये चालू किया, this was the first problem we did. u is equal to x raised to x. तुम्हारे बुक में देख लो. The first problem that we did was it was just y is equal to x raised to x. And the basic part was x raised to x. So you can literally copy from there or write down the solution. ठीक है? Sir, what is our correct answer is about x raised to x? नहीं कॉमर्स में नहीं अलाउड. आई डोंट नो व्हाई. अदरवाइज यस ऑफ कोर्स इफ इट कम्स फॉर 1 मार्क dy dx of x raised to x is x raised to x into 1 plus log x. x raised to x into 1 plus log. हाँ वो आंसर आता है. बट अभी सॉल्यूशन वैसा नहीं लिखना है. पूरा सॉल्व करना है. सो टेक log u will be equal to x log x. Then 1 upon u du by dx. तो जो मेथड किया था पूरा सॉल्व करो. You can do that whole thing. ये लेने थे. First problem put together the logarithmic differentiation का तो के इसलिए ना पहला प्रॉब्लम कॉपी कर रहे थे y to the du है. हो गया. ठीक है. So I'll write the answer directly that you get this as du by dx is equal to x raised to x into 1 plus log x. Okay. Or at the most I might write d by dx of x raised to x is x raised to x into 1 plus log x. इक्वेशन भी सिर्फ इसको इक्वेशन बोलना रह गया है. दिस इज इक्वेशन 1 और ये जो dy by dx फर्स्ट टर्म में आया इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन
2 and this is equation 3. Okay, itna label. Now what you have to do is substituting from 3 in 2. Substituting from 3 into we get into into only. Okay, we get dy by dx is e raised to x into x raised to x into 1 plus log. That's the answer. Okay. Method 2. Method 2 is similar to the method 1 we did in the previous problem. So you have y is equal to e raised to x. Log ले लो. Because both बार log है ना, directly log. Why am I doing both methods? Some people might go by this. Some people by default will take log x raised to x दिखा है तो log ले लेंगे. So you shouldn't be अरे ऐसा नहीं करते. कर सकते basically. So log y is equal to log e raised to x. Therefore log y is equal to x raised to x log e, and log e is always 1 in calculus. So log y is equal to x raised to x into 1. Reason, log e is 1. Therefore log, so now see, this is log y is x raised to x. इसके लिए फिर से log लगेगा because x raised to x ढूंढना है. So it's log of log y is equal to log of x raised to x. तुमको दिखाई दे रहा है ना, बीच में नहीं आ रहा, ठीक है. So just to slow down the speed, what I am doing is rubbing on this side instead of scrolling down. It's like a board I use this side and that side. थोड़ा speed मेरा slow हो जाए. Till that time you can copy on one side. Correct. Okay, that. Okay. Now differentiating. Differentiating above equation with respect to x, we get d by dx of log y is equal to, इधर सिर्फ एक स्टेप रह गया, इधर लॉ ऑफ लोगैरिथम्स यूज करना था. सो हियर ये स्टेप रह गया नीचे. ओके, log of log y is equal to x log x. So this is x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x. You can recognize the same things that happen again and again. कुछ नया नहीं उसमें. It's very easy to handle, right? Actually easy. Initially hard लगता है, but it's easy. So it's 1 upon log y into d by dx of log y is equal to x into 1 by x plus log x into 1. Therefore 1 upon log y into 1 upon y dy by dx is equal to 1 plus log x. This x and x has cancelled. Shift everything on the right hand side. So therefore dy by dx is equal to y log y into 1 plus log x, which is equal, y क्या है, e raised to x, log y क्या है, x raised to x, correct? And right ना, it's over here, log y is over here, x raised to x. Okay, so अभी इसको y is equal to e raised to x, ये वाला equation 1 हो गया. This equation is 2. Okay, see, this equation is 2. ये 1, ये 2. अब इसको से सब्स्टिट्यूट करना है. So y we have substituted, log y we have substituted into 1 plus log x. Okay, by
1 and 2. Oh. It's very easy. Derivatives is actually very easy. ठीक से अगर तुम कूल रहोगे ना, easy है. तुम ऐसा बहुत हार्ड है नहीं जाएगा, नहीं होता. It's just like cycle. It's just like car. The moment you start thinking, अरे driving car is very hard, you will never be able to do it. The moment you have a cool head, आराम से सीखो, right? So you have to keep your head cool. ऐसा rush नहीं करना है. One problem, when you are learning, if you are finding it difficult, do 2 problems in a day. और वही 5 बार करो, आराम से करो, हो जाता है. ठीक है? Don't rush. घाई घाई करके कुछ नहीं होता. Nothing. No one has ever achieved anything by being in a hurry. The fact that someone is in a hurry, that means there is a problem with that person. Right? तुम्हारा पेपर भी, if you are running short of time, then there is some problem you have done. पेपर आसान रहते, इतना डिफिकल्ट नहीं रहते, इतने लेंदी नहीं रहते कि खत्म नहीं. तुम्हारा पढ़ाई कब गिरा, कुछ तो गड़बड़ हो गया. या you did one problem 3 times, तुमको जमा नहीं, तुमको कंफ्यूजन हो गया, तुमने कैंसिल किया, वापस वही सॉल्व किया. ईगो, राइट? समटाइम्स इट्स ईगो कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, छोड़ दो, दूसरा करो. नहीं, मैं ये करते हैं, देन यू सफर. ठीक है? सो हो गया. दिस इज द आंसर. द नेक्स्ट वन इज y is equal to 1 plus 1 by x raised to x. हेलो, हाँ, मैं आंसर बोलूँगा तो ठीक है. So y is equal to, चलो हम लोग एक कलर ज़रा चेंज कर देते हैं. y is equal to, what was it, 1 plus 1 by x raised to x. सर ये रह गया ना क्या? सेकंड वाला. अच्छा, सेकंड नहीं हुआ. ओ, लेट्स डू द सेकंड. So what was that second one? Question क्या है? y is equals to x raised to e raised to x raised to e raised to x. तो this is again it's very same method. log y हाँ तो वापस. पेपर में जाकर ओके, एक लाइन सिर्फ है. देखो ये तो बहुत आसान है, बिकॉज log y it will be e raised to x log x. e raised to x. अभी कुछ करने की जरूरत नहीं ना. e raised to x का डेरिवेटिव है हमारे पास. So product rule, 1 upon y dy by dx is equal to e raised to x into 1 by x plus log x into e raised to x. Bring y over here, you get x e raised to x. e raised to x कॉमन भी आ जाएगा, so it's 1 upon x plus log x. Okay. ठीक है? So there is nothing to go. ये इनफैक्ट आसान था. नहीं आया तो पूछ लेना. ठीक है? So let's do. unnecessary रब किया मैंने, अच्छा लिखा था. y is equal to 1 plus 1 upon x raised to x. Now see, even maths ना, I'll tell you one more thing. अभी जो हम लोग करने वाले हैं डेरिवेटिव्स, अभी शायद मंडे को ख़त्म हो जाएगा. ठीक है? उसके बाद भी नॉट दिस पार्ट, जो मेन क्लास में सीखा हुआ, दैट विल फिनिश ऑन मंडे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद समथिंग लाइक कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, विच इज़ वेरी इजी, एकदम इजी. 7th स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत सारे. तो क्या हो जाता है, पीपल हाँ ये आ रहा है, वही प्रैक्टिस करते रहते हैं. सो मैं करो प्रैक्टिस, बट दैट इज ओके. 15 मिनट्स 30 मिनट्स कर लें. डेरिवेटिव्स को छोड़ना नहीं, डेरिवेटिव्स प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज इसके ऊपर नेक्स्ट 4 चैप्टर्स बैठे. तो वी डोंट वांट दिस कि भूल गए फिर वो नहीं समझ में आए. सो यू हैव टू मेक श्योर योर डेरिवेटिव्स पक्का है. ओके, पूरा पक्का रहना चाहिए. सो डोंट फॉरगेट दैट. सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी देखो इधर अगर log y डायरेक्टली लिया ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज सी व्हाट हैपेंस, यू नीड टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. डोंट राइट दिस, बट इफ यू टेक log y, ये तुम्हारा आंसर ऐसा आ जाएगा, x into log of 1 plus 1 by x. नाउ वी कैन सॉल्व दिस
ऐसे नहीं कि कर नहीं सकते, बट ये क्या हो जाएगा x इंटू देन 1/1 प्लस 1/x इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस 1/x, ऐसे जाएगा, करेक्ट ना? सो इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस, उसमें झंझट ज़्यादा है, बट वी कैन सेव आवर सेल्फ ऑल दैट मेस बाय जस्ट डीलिंग विद दिस इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट इज वी कैन राइट दिस एज y is equal to x plus 1 upon x raised to x. Okay, ये फर्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं, राइट? So we have left no option for any person to say हमको समझा नहीं, एक टाइम उधर हो गया और किसी दूसरा टाइम हो रहा है, रिकॉर्डिंग है, अगेन सितंबर अक्टूबर में वापस कभी तो हो जाएगा रिवीजन, सो यू वोंट बी एबल टू से मुझे समझा नहीं, सर ने सिखाया नहीं, यू वोंट बी एबल, यू लीव पीपल विथ नो एक्सक्यूज, दैट्स आवर कॉन्फिडेंस, पीपल कांट गिव एक्सक्यूज, करेक्ट स्वरा? ओके, सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड स्वरा? अकेलो तादी नहीं, ओके, सो log y is equal to log of x plus 1 upon x raised to x, and so therefore log y is equal to x into log of x plus 1 upon x, the same steps, taking log on both the sides, correct, using laws of logarithm, so log a raised to m is m log a, लिख लेना reason, log a raised to m is m log a, right? Now I'm going to use laws of, before I take the derivative I'm going to use laws of logarithms. So this is x into log of x plus 1 minus log x, ठीक है, log of x plus 1 minus log x. Now this is going to be my u and this is going to be my entire term, okay? So differentiating above equation, differentiate, ये log m minus log n, करेक्ट, समझ में आया ना? log m by n is log m minus log n, अपना रीजन लिखो, log m by n is log m minus log n. So differentiating above equation with respect to x, we'll get 1 upon y dy by dx is equal to x into d by dx of log x plus 1 minus log x. I'm writing this step directly, okay? Log x plus v, that is log of x plus 1 minus log x into d by dx of x, okay, directly here. Now why I can write this directly is because I have written over here differentiating, okay? The moment you write this differentiating, that means I have used the product rule over here, I can do that directly. अगर ये differentiating लिखा नहीं होता, then I have to show it's d by dx of this is equal to d by dx of this, then u into v, तो steps जाते हैं, ठीक है? सर संडे को भी आना है? नहीं, संडे को क्यों आने, कल सैटरडे, मुझे कुछ काम धंधे नहीं के, तुमको नहीं रहेंगे काम धंधे, वो आते हैं। मेरी वाइफ मार देंगे ना मुझे संडे को आए, करेक्ट? So therefore 1 upon y dy by dx is equal to x into, now this is subtraction, so it's going to be d by dx of log of x plus 1 minus d by dx of log x plus log of x plus 1
minus log x into 1. d by dx of x is 1. Correct? Second term का derivative 1 है. So which is equal to x into d by dx of log x plus 1. So it's 1 upon x plus 1 into d by dx of x plus 1 minus 1 by x. Right? ये ब्रैकेट, so ये ब्रैकेट का मैं शेप चेंज कर देता हूँ अभी. It's this bracket and this, plus log x. Now see this, log x plus 1 minus log x जो है, we will rewrite it as log x plus 1 upon x. उसका जो काम था वो हो गया. log x plus उसको सेपरेट करके वापस उसको साथ में देखते हैं. It's like a ट्रेन का बोगी, एक बोगी को इधर बिठाना था, इसीलिए इधर से निकाला, इधर बिठाया, उसका काम हो गया, निकाला. Like a catalyst they have used it. And so therefore dy by dx is equal to y इधर गया, and now this is the big bracket, it multiplies everything. So this is x into 1 upon x plus 1 into 1 plus 0. If you want, you can keep that y for this step down only. Okay, I'll do that, it's better. 1 upon y इधर रख देते, ये निकाल देता हूँ इधर से. ठीक है, ये जो है वैसे ही लिखता हूँ मैं, so that there is no much confusion. So x into 1 upon x plus 1 into 1 plus 0 minus 1 by x plus log of x plus 1 upon x, which is equal to x into, now I can take LCM, so this will be x minus x plus 1 divided by x into x plus 1 plus log of x plus 1 upon x. This is 1 upon y dy by dx, which is equal to, so this is x into, this is x minus 1 divided by x into x plus 1. So this x and x will cancel, plus log of x plus 1 upon x. So x and x फिर वापस कैंसिल हो जाते हैं, x and x goes, and so it is equal to minus 1 upon x plus 1 plus log of x plus 1 upon x. Okay, remember again, this is 1 upon y dy by dx. Therefore dy by dx is equal to y into minus 1 upon x plus 1 plus log of x plus 1 upon x, and therefore dy by dx is equal to, y का वैल्यू क्या था, it was 1 plus 1 by x raised to x, and this will write minus 1 upon x plus 1 plus, here we will rewrite this as log of 1 plus 1 by x, because हमको आंसर 1 plus 1 by x में था ना, इधर 1 plus 1 by x term. So if we can make the term 1 plus 1 by x over here, separate करके x upon x plus 1 upon x, तो x x cancel हो जाता है, so 1 plus 1 by x, तो ये हो गया, that's done, and that's by equation 1. Okay, तो ये थोड़ा lengthy problem था. कौन मैसेज भेज रहा है, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, सिर्फ 14 मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं. कौन लोग ये, कौन
कहाँ से आते हैं वो और रील में रहते हैं, कहाँ से आते हैं? नहीं बस नहीं, ये हम लोग और एक प्रॉब्लम कर लेंगे ना, एक ही तो प्रॉब्लम बचा है ना, कितने हैं और 2 में, अच्छा 3 है ना, तो 3 नहीं करेंगे, सेकंड प्रॉब्लम कर लेते हैं, दैट्स सफिशिएंट। आई नो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन तकलीफ देता है, you can't do much, that's why I've decreased my speed also. Today's paper was very easy, I don't know what you did. बाकी सब लोगों ने किया क्या है पता नहीं, बट पेपर तो बहुत इजी। हाँ क्यों, इजी तो था पेपर, क्या था उसमें, सिंपल सब करेक्ट लगा, इधर आके सब गलत। y is equal to 2x plus 5 raised to x, 2x plus 5 raised to x, so log, अभी ये जरा फास्ट लिखेंगे, log y is equal to log of 2x plus 5 raised to x, therefore log y is equal to x into log of 2x plus 5, reason log a raised to m is m log a. Okay. So differentiating, so second step हो गया, we are on the third step, differentiating above equation with respect to x, comma we get comma d by dx of log y is equal to d by dx of x into log of 2x plus 5. Therefore 1 upon y dy by dx is equal to x into d by dx of log of 2x plus 5 plus log of 2x plus 5 into d by dx of x. उसका ट्रॉमा खत्म नहीं हुआ अभी तक। So therefore 1 upon y dy by dx is equal to x into d by dx of log 2x plus 5. So it's 1 upon 2x plus 5 into d by dx of 2x plus 5 plus log of 2x plus 5 into 1. वो देवाशीष ले रुका ना, आया ही नहीं था ना, दिमाग है ना, एक एक कार्टून लोग रहते, x upon 2x plus 5 into d by dx of 2x plus d by dx of 5 plus log of 2x plus 5. Therefore 1 upon y dy by dx is equal to x upon 2x plus 5 into 2 plus 0 plus log of 2x plus 5. Therefore 1 upon y dy by dx is equal to 2x upon 2x plus 5 plus log of 2x plus 5. And therefore dy by dx is equal to y into 2x upon 2x plus 5 plus log of 2x plus 5. And therefore dy by dx is equal to 2x plus 5 raised to x into 2x upon 2x plus 5 plus log of 2x plus 5 brackets closed by equation 1.
where this is equation 1. Okay. 3 marks for this. If you do it properly, it becomes very easy actually. तो इंटू से लिखना है, वही तो चीज है. If you actually write it fast, if you practice it enough, you'll recognize कि 3 मार्क तो मुश्किल से 3 मिनट में बोलो. 1 मिनट में 1 मार्क मिल रहा है. इसको 3 मिनट में नहीं लगेगा लिखना. Right? We almost wrote it right now. So we wrote it in 1.5 या 2 minutes में लिख लिया इसको. तो 2 मिनट में 3 मार्क मिल रहा है. That's a huge speed. और तुम्हारा पेपर जो रहते हैं तो पहले तो 5-6 MCQs रहते हैं, वो भी फटाफट हो जाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, वो फटाफट आते रहेगा. नहीं तो फिर उधर ही बैठना पड़ता है. आते रहेगा तो वो भी फटाफट हो जाते हैं. एंड देन यू हैव ट्रू एंड फॉल्स 3 क्वेश्चंस. सो 12 मार्क्स जो पहले पेपर 1 के 12 मार्क्स, यू कैन गेट इट इन लिटरली 5-6 मिनट्स. एंड प्लस यू हैव दिस क्वेश्चन, यानी कि 10 मिनट में तुम्हारा 25 मार्क हो गया ना. ऐसा 10-20 मिनट में 25 मार्क का क्वेश्चन पेपर हो जाता है. क्योंकि पेपर 2 में भी है वो. So you have 25 marks in just 10 minutes, 10-15 minutes. Then you have 3 hours paper. Right? So 25 मिनट ही गया उसमें. 1.5 घंटा है बाकी का 75 minutes. Huge time. So it's very easy unless you mess it up. And the only way you can mess it up is by not studying throughout the year. That's the only way you can mess it up. I've never seen anyone who has practiced the whole year and then says I होता ही नहीं. अगर पेपर में कुछ आया है तो हम लोग ने पढ़ाई किया नहीं. What was required we didn't do or we didn't understand. दोनों में से एक. किसी ने ट्रॉमा बीमा कुछ करने का ट्रॉमा बीमा वगैरह क्या ऐसे बड़े वर्ड यूज नहीं करते. ट्रॉमा, डिप्रेशन, ऐसा नहीं, ऐसा अलाउड नहीं. बिंदास जो है वो है. 2 मार्क तो 2 मार्क, मेरे को 2 मार्क मिले. ओके, नेक्स्ट टाइम टेक गो टू 3, 4. हो गया ना? That's all for today. Okay. So remaining part will continue next time. ये recording stop करने बोलते हैं, तो इधर हम लोग कुछ भी बात करते सब रिकॉर्ड हो जाएंगे. एक टाइम हो गया ऐसा, 2 घंटे का रिकॉर्डिंग हो गया. मैं भेजा ही नहीं बाद में किसको.